Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. The title of the book is Progressive English, Unit 1, Where We Live Now. Today our topic is to teach poetry. Open your book on page number 10. Poetry. The word poetry English means literary work in which the expressions of feelings and ideas is given intensity. Intensity means shadeed by the use of distinctive style and rhythm. Poetry Urdu meaning is शायरी. Across the Indus के पार. This poem has been written by Shahid Hussain. In this poem he is sharing his feelings and experiences by across the Indus. This poem Across the Indus express feelings similar to Imran Khan's In Summer in Murray. ये जो पोएम अक्रॉस द रिवर है ये एक्सप्रेस करती है, इजहार करती है अपनी फीलिंग्स का, और ये जो है सिमिलर है इमरान खान की गर्मियाँ मरी में. हाउ ब्यूटीफुल इट सीम्स. सीम मीन लग रहा है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है. दैट क्राउडेड फेस्टरिंग इंसिस्टेंट सिटी. Crowded mean full of people. Crowded mean full of people. Festering mean of a wound forming pus. Urdu means peepdar zakham. Insistent mean demanding something. इसरार करना. Dirt, barren heat, the cruel drone of flies. Dirt mean गंदगी, barren बंजर, the cruel drone of flies. Drone of flies mean make a continuous low humming sound, mean sound of flies. The source predate to indifferent eyes. Source mean अ पेनफुल प्लेस ऑन द बॉडी, यानी एक बॉडी की ये ऐसी जगह जो जहाँ पे तकलीफ़ है. मीन ज़ख़म. सोर्स मीन ज़ख़म. द रूइंड हाउसेस लीनिंग टू ईच अदर. द रूइंड हाउसेस. रूइंड मीन तबाहशुदा घर. लीनिंग झुके हुए, एक दूसरे के ऊपर झुके हुए थे. डिसगोर्जिंग नेकेड अनअपीलिंग चिल्ड्रन. डिसगोर्जिंग मीन to force something up from the stomach and out through the mouth, mean vomiting. Unappealing children, गैर पुरकशिश बच्चे. Playing their games in self created filth. Filth mean गंदगी, यानी गंदगी में अपने self created खेल गेम्स जो थे वो बच्चे खेल रहे थे. The suffocating obliterating dust. The suffocating mean दम घुटना. सुफिकेटिंग मीन दम घुटना. ऑब्लिटरेटिंग मीन ख़त्म करना, मिटाना. स्विरलिंग फॉर एवर इन दी नॉइजी लेंस. स्विरलिंग मीन चक्कर लगाना, गर्दिश करना, हमेशा नॉइजी शोर वाली लेंस में. बट आई हैव क्रॉस द रिवर. लेकिन मैंने जो है रिवर जो है क्रॉस कर लिया, पार कर लिया. प्लेसिंग द डीप एंड ईजी फ्लो ऑफ ग्रीन between the life and this. Clean and tie like in the distance. यानी ये clean था और tie like मीन खिलौना नुमा था. distance फासले. Quit मीन खामोश, प्योर, खालिस, and captivating मीन सहर अंगेज. यानी quit खामोश, प्योर, and captivating और सहर अंगेज. Lies the city gracefully the houses. यानी सिटी में जो थे ग्रेसफुली बहुत शानदार घर थे. जोसल ईच अदर टू द रिवर्स बैंक्स सो द इंडस मिरर. जोसल मीन धक्का देना. दोज डर्टी शेडोज लाइक अ ड्रीम इन क्रिस्टल. वो जो डर्टी शेडो थे वो एक इस तरह साफ शफाफ ड्रीम सा दिखाई दे रहा था. क्रिस्टल मीन साफ शफाफ, वाजे. एंड द अगलीनेस आई सॉ came away from along the
placid. Placid mean पुरसकून, साकित. Water flows away. Placid mean पुरसकून, साकित. यानी जो अगलीनेस मैंने उसने पोइट ने देखी थी, लाइक अ ड्रीम, वो एक ड्रीम थी जो साफ शफाफ होगी. एंड दी एगलीनेस और बदसूरती थी, आई सा, पोइट कह रहा है मैंने देखी. एंड केम अवे फ्राम लॉन्ग दी, और उसके वहाँ से कैसे आया है वो पुरसकून वाटर के साथ, जो चल रहा था उसके साथ आ गया. स्टूडेंट्स नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. You have to do reading for detail. For example, name the things which the poet does not like about the city. Students, I have taught you people that the poet does not like, for example, crowded, festering, insistent city, dirt, barren heat, the cruel drone of lies, etc. All of this you have to do. Vocabulary. The first verse is a very vivid description of a busy, crowded, dirty, hot city. Use your dictionary to explain the meaning of the following words. First word is festering. Festering means, for example, unclean. Next is humming sound of flies. Drone mean humming sound of flies. Indifferent, without interest. Disgorging, vomiting. Obliterating, destroy. All of these you have to do. Come on next page, that is page number 12. Reading for interpretation. You have to do reading for interpretation. Participles. Students, you are familiar with participle. What are the participles? The participle as the part of the verb. Participle जो है वो verb का part है. For example, the participle is the part of the verb with the ing ending. Participles mean ये verb हैं जो ing के साथ end होते हैं. For example, swinging, laughing, traveling, etc. A participle can be used as part of the verb. यानी participle जो है as a part of the verb भी use कर सकते हैं. For example, she was swinging too high when the cable broke and she fell. Next example is he is always laughing. Students, now note down your homework. Your homework is reading page number 10. You have to read the page number 10 again and again, and also you have to write the meaning of the difficult words in your notebook, and also you have to write an essay on my favorite teacher in your notebook and learn. This essay you can write from your grammar book. Next we will teach in next lecture. Students, take care. Allah Hafiz.